महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रायल रूप में आएगा। देखना आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है। के नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वो चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे।
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है एक दो की राय को रिगार्ड दो। अव्यक्त इशारे। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएंगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो। फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हैं। ऐसे कहावत भी है कि परमात्मा प्रेम का सागर है। बाबा भी जो हमें शिक्षा देते हैं वो प्रेम से देते हैं। आप कुछ दिन तक साकार बाबा की मुरली सुनते रहे तो बाबा बहुत प्रेम से समझाते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिससे भावना उत्पन्न होती है, और जब भावना होती है तो कार्य करना सहज हो जाता है। अगर भावना नहीं है तो जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेम की शक्ति इस समय पर हम सभी को प्रभु का प्रेम मिलता है, तो हम भी अपने स्वरूप प्रेम स्वरूप बनाएं। कईयों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेम के स्वरूप में लोग एडवांटेज ले लेते हैं, या इसलिए वो समझते हैं कि अगर तो गंभीरता तो जरूरी है। गंभीरता अलग है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही सूखापन कहें, या वो जो हर्षित मुक्ता होनी चाहिए वो कम होती है। जैसे 2-4 दिन तक हम चंद्रमणि दादी का सुनते रहे तो बहुतों ने कहा कि हमको उनका प्रेम, उनका नशा, उनकी रूहानियत का बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। इसलिए हम लोग प्रोग्राम में पूर्वज आत्माओं को लाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बाबा को समझा और फिर कईयों ने धारण भी ऐसा किया जैसे वो खुद प्रेम स्वरूप बन गए। तो इसलिए प्रेम से किसी को समझाना ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रेम से भावना, भावना से एकदम आता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती करते हैं,
मेहनत से करते हैं, पर प्रेम से बहुत सहज हो जाएगा। ऐसे उदाहरण हमको रोज मिलते हैं, तो इसलिए हमें करना क्या है, प्रेम स्वरूप रहो। ठीक है, मर्यादाएं हैं, बाबा के नियम हैं, वो भी तो प्रेम से समझाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई मर्यादा है, कोई मर्यादा को तोड़ भी रहा है, तो हमें कोई नाराजगी तो नहीं करनी है ना। हमारी मामा, हमारे बाबा, मामा भी बहुत बहुत प्रेम से समझाती थी, तो वो दिल को लगती है बात। और जब कोई बात दिल को लगती है तो करना सहज हो जाता है। तो इसलिए स्नेह बहुत जरूरी है, और सम्मान देना सबको बहुत जरूरी है। कोई भी, हम लोग जब ज्ञान भी आए, तो हमारी दीदी मनमोहिनी, अपने बड़ों से कैसे रहो, अपने जो समान है उनके साथ कैसे चलो, हमारे जो छोटे हैं उनसे कैसे चलो। क्योंकि अगर हम छोटों से भी उनको सम्मान देते हैं, तो वो भी सम्मान देते हैं। आजकल तो बच्चों को सिखाते ही ऐसे हैं, क्योंकि वो माँ बाप का भी नाम लेंगे, तो उनको सिखाना पड़ता है, भाई उनको मम्मी पापा बोलो या कुछ अच्छे शब्द बोलो। परंतु फिर माँ बाप जिस तरह से बच्चों से बोलते हैं, तो इसलिए स्नेह है तो सम्मान दो सबको। ये नहीं तो छोटा है तो जैसे भी चाहे हम बोलें, क्योंकि जैसे अपना बोलना होता है ना, फिर धीरे धीरे दूसरे का जवाब देना भी वैसा ही हो जाता है। तो अपने सम्मान के लिए दूसरों के साथ समान का व्यवहार करें, तो स्नेह और सम्मान। और फिर तीसरा तो सहयोग है ही। परंतु आज बाबा जो अव्यक्त इशारा सुना रहे हैं, उसमें बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे को, एक दूसरे की राय को सम्मान दो, रिगार्ड दो। दादी जान की हमेशा कहती थी, एक दो बार पीछे जाई, मैंने कुछ प्रश्न पूछा, बोला ना किसी को कभी भी नहीं बोलो। हाँ, टाइम पर हो जाएगा, बात तो ठीक है आपकी, एक्नॉलेज भी करो। ये नहीं कि हाँ हमने जवाब नहीं दिया, पर हमने तो स्वीकार कर लिया था, पर दूसरे को क्या पता है। तो इसलिए मुख से भी बोलो कि हाँ, राय तो आपकी बहुत अच्छी है, जरूर हम इसको कंसिडर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। कोई भी हो, हमारे पास कई बाहर वाले लोग भी बहुत तरह की राय देते हैं, अगर आप लोग ये करो तो ये होगा। तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम विचार करेंगे, बात तो आपकी राइट है। तो इस तरह से ये भी जैसे एक हमारा सम्मान कहेंगे। जैसे कल परसों बाबा ने नहीं कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करो, तो उस पर बाबा ने कहा अगर एकता है इतनी माताओं की, तो विश्व में एकता जरूर होगी। ऐसे ही सम्मान देना, प्रेम और सम्मान, उसका भी हमें एक उदाहरण बनना है, कि इस बहन का या इन सभी इस संस्था में बहुत सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि सम्मान और सम्मान का बहुत बहुत गहरा संबंध है। हमको बहुत जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए सम्मान के, फिर सम्मान भी पूरा हो जाता है और भावना भी नहीं रहती है। तो इसलिए कोशिश करके अपनी सम्मान की सीट पर हमें सदा सेट रहना चाहिए, तो सम्मान दे सकेंगे। चाहे दूसरा अपमान करता है, पर मैं सम्मान दूं। इसीलिए तो एक परिस्थिति आती है ना, कि गुण यूज करो। परिस्थिति क्यों आती है हमारे लिए?
कि कोई शक्ति यूज करो, कोई गुण यूज करो, तो पास विद ऑनर भी होंगे और दूसरे को भी जैसे आपने समान बना रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। ये बाबा कहता है 5 बातें, ये 5 बातें हर एक के हर कदम में नजर आए। एक बार फिर पढ़ती हूँ। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। ये 5 बातें हर एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। सबको ये प्रश्न आता है ना, कैसे प्रत्यक्ष करें? तो बहुत अच्छा बाबा ये प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं कि प्रत्यक्षता कैसे होगी। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे पोजीशन वाले व्यक्ति थे, तो अभी हमने पीस विलेज नया नया लिया था, तो हमने उसको बुलाया। कहते हैं अभी तो मुझे विश्वास होगा कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि उसे पता था ये तो थोड़ी बहनें हैं, थोड़े ही लोग हैं। पर बाबा ने जैसा स्थान दिया, तो कोई भी कार्य करते हैं ना, चाहे वो संगठन में गुण का प्रदर्शन हो, चाहे वो संगठन में शक्ति का प्रदर्शन हो, तो लोगों के मुंह से खुद ही निकलेगा ये तो भगवान के बच्चे हैं। स्नेह इतना हो जो हर एक के मुंह से निकले। तो अभी वर्तमान समय जैसे आप रेस करो, सभी विजय बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो मन में जब ये रहेगा तो अपने आप ही खासकर आजकल जो व्यक्ति इशारे आ रहे हैं वो प्रत्यक्षता के, वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब हमें क्लियर हुआ। पहले हम सोचते थे आवाज फैलेगी, क्या होगा, पर बाबा कहता है कि अभी आप लोगों को मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाकी सत्यता, बाकी बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक संस्कारों में हमारे संस्कारों का प्रभाव कभी भी परिवार में चाहे बाबा के स्थानों पर नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबा कहता है संस्कारों में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं एकता में एकता में लाना है। कैसे एकता में सबको लाना है? एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। कोई भी राय देता है उनको बोलो हाँ जरूर। मैं कई बार दादी से कहती थी, दादी जब भी मैं इस विलेज में आती हूँ तो उनका होता है कि ये भी होना चाहिए। बोलो हाँ जरूर होगा, थोड़ा समय समय पर होगा। ये नहीं बोलो क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हम कर भी नहीं सकते हैं, ये जवाब मत दो। हाँ जरूर होगा, आपने राय दी, बहुत अच्छा है, हम जरूर इस पर ध्यान देंगे। ना इस तरह से ऐसे भी लौकिक में भी जो रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं वो कभी किसी की राय ठुकराते नहीं है। कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चे भी कोई ऐसी बात कह देते हैं जो बहुत अच्छी होती है। आजकल तो देखो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स से राय करते हैं। कोई ऐसे केसेस होते हैं उनका बेटा डॉक्टर है, उनसे भी राय करते हैं।
क्योंकि वो आजकल उसको ज्यादा मालूम होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा कभी भी कोई काम अकेले नहीं किया है, कभी भी। 2-5 की राय ले लो तो उससे अच्छा रहता है संगठन में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, 1-2 की राय को रिगार्ड दो, बोलो हाँ जी, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, और फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। कईयों को सर्टिफिकेट मिलता है, ये बात को सुनते हैं। कईयों के लिए कहते हैं ये सुनेगा तो नहीं, वो तो अपने मन की सुनता है या अपनी बुद्धि की सुनता है। ऐसे वातावरण में बात आती है कि हम कुछ भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो अपनी ही चलानी है। तो ऐसा वातावरण हम लोगों के लिए नहीं बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर एकता के बंधन में बंध जाओ, यही एकता सफलता का साधन है। और फिर आगे क्या ऐड करते हैं कि यही एकता बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। हाँ, तो एक एकता, और आज बाबा ने कहा सम्मान दो सबकी राय को। तो संगठन में भिन्नता होते हुए भी, संगठन में भिन्नता होते हुए भी क्या होगा? तो भिन्नता नहीं दिखाई देगी, एकता ही दिखाई देगी। तो बाबा की ये 5 बातों को याद करते हुए, बाबा की 5 बातों को याद करते हुए बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। एक बार बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन अभी क्या करना है, बच्चों को मुझे प्रत्यक्ष करना है। तो जब से सुना है यही शब्द मन में गूंजते हैं कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके साधन, उसकी विधि क्या है, वो बाबा रोज आजकल अव्यक्त इशारे में हम लोगों को सुनाते रहते हैं। तो आगे चल के भी बहुत बातें मिलेंगी। अभी हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करें कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके लिए जो भी बाबा विधि बता रहे हैं उस पर थोड़ा अटेंशन देना बहुत जरूरी है। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षणों के लिए इतना दृढ़ संकल्प करेंगे।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी तारीख है 14 मई 1977। स्वमान और फरमान। सम्मान दो व सम्मान मिलना चाहिए, वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता। लेने वाले हो या देने वाले हो, यह भी लेने की भावना रॉयल बेगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, बाकी क्या करना है, हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने कारण माया भी जाट को रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करे। माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावे। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। तुझे देख के आते बाबा यार, उस दिल पर जाऊं मैं बलिहार। आधार मूरत हो विश्व की तुम। तो ये हम स्टूडेंट है, पहचान से हम सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हम स्टूडेंट हो गए हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमको तो सबको पहचान है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, कौन बोल रहा है, समझा नहीं। तो हमारे को कौन पढ़ा रहा है, उस स्नेह से शब्द शब्द को सुन रहे हैं, तो उसी टाइम हम परिवर्तन होते हैं, संस्कार बदलती है। परंतु कोई जो कहती है हम रिपीट कर लेते हैं, पर योग लगता नहीं है। हम योग में बैठते हैं नहीं, तो वो ही समझे कुछ बैठ के पढ़े लिखे, समझा। कईयों की दिल होती है ऐसे ही हम बैठे, जुटका ही आता रहता है,
मेरा आधा बड़ा टाइम तो ऐसे ही गया। इनसे मैं कुछ पढ़ लेता, बुद्धि में तेज होते हैं, पढ़ लेता। तो वो योग का रस क्यों नहीं? नॉलेज है नहीं, ज्ञान तो नाली लाइट है, और उससे ही माइट आनी है। इसका मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं गया हुआ है। योग नहीं लगा, योग का ज्ञान बाबा दे रहा है, परंतु वो बुद्धि धारण नहीं कर रही है। वो कारण है अंदर, है तो ज्ञान ही, बुद्धि वो ग्रहण करेंगी। पर बुद्धि योग कहाँ है? जिस टाइम सुना उस टाइम की अवस्था क्या है? बात तो उस उमंग से, उस पहचान से, उस स्नेह से, उस संबंध से आ, सुना, या कोई उस टाइम बुद्धि इधर उधर घूम रही है? कुछ घूम भी रही है, कुछ सुन भी रहा। बुद्धि तो तेज है, वो भी बात ले लेंगी तो बाबा की बात भी ले लेंगी, तो मिक्स मिक्स हो गई पढ़ाई। देदारी की भी अंदर बात चल गई तो बाबा की भी बात सुन रही हूं, तो वो मिक्स हो जाती है। तो वो बात अंदर धारण नहीं करने देती है। समझा नहीं? योग क्यों नहीं लगता है? अंदर कई कारण होते हैं। नहीं तो ऐसी बाबा हमको पढ़ाई दे रही है, फ्लाई करना शुरू हो जाए, एंजल बनना शुरू हो जाए, परंतु बहने इतनी बुद्धिमान, और वो कहीं हमारे में शक्ति नहीं है। ज्ञान के सागर की सूरत तुम, सोए थे सभी के भाग जागे, तू भाग्य विधाता वरदानी, तुझे देख के आते बाबा याद। Om Shanti. With the speciality of unity and faith, become full of success. Give regard to one another's advice. Have unity, cleanliness, refinement, sweetness and greatness in your thoughts, words, and actions. When these 5 things are visible in each one's every step, the Father's revelation will then take place quickly. Any differences that are now visible in your sanskars have to be brought into unity. For unity, give regard to one another's advice. Say Hanji, yes indeed, and definitely give your ideas. Then become tied with a bond of unity. This unity is the means of success. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 7. With the speciality of unity and faith, become full of success. Today's topic: give regard to one another's advice. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Okay, everyone is okay. The theme of
some of these Vyakti points is the methods of how to reveal Baba. So many people ask me what is exactly will happen. And we think it is through the mics, it is through someone else. But I had been taking sustenance from Baba. Baba is giving us so much. So even today someone said, I feel so much love for Baba. What should I give in return to Baba? And I said, reveal Baba through your every word, every action, your vibrations, reveal Baba. So what is revealing Baba? The different methods. Is that whether it is through gathering, whether it is individually, whenever I am instrument for seva, what I have to reveal. So Baba is giving 5 points today. First is, as I always say, love means respect, and respect means cooperation. Right? So Baba is saying, give regard to one another's idea. Because for everyone, oh, she will do anyway what she wants. So they withdraw. But it should be such openness. Yeah, you can say, what is your idea? So Baba says one is unity, cleanliness, it says here refinement, but it is more like go into the depth of everything. Hmm? Then sweetness and greatness. Mahinta in Hindi, they says like subtlety of everything. Everything has a deep meaning also. So unity, cleanliness, refinement, sweetness, and Baba says greatness in your thoughts, words, and actions. Baba says when these 5 qualities, these 5 qualities are visible in each one's every step, the Father's revelation will then take place quickly. Any differences that are now visible in your sanskars have to be brought into unity. And for unity, give regard to one another's ideas. Say Hanji, Hanji, yes, indeed, and definitely give your ideas. When we accept people's ideas, there is an open kind of relationship, communication, then become tied with a bond of unity. Baba says this unity is the means of success. And success at this time is revelation of Baba. Because we have to do something, right? Even we are doing well and everything is good. I am okay, service is okay, but how we make some difference now. So I think with 90th year of Yagya, everyone should take this thought, I have to reveal Baba. Sanskars are visible, you don't have to reveal them. But I have to reveal Baba. I think that will also help for self-progress and increase depth and bring many, many, as Baba said, beautiful qualities in our life. So
it really touches the heart what I have to do in return of what Baba had been giving me. All the sustenance which we are getting from Yajna, how do I reveal Baba? And then whatever knowledge we gave about Yajna, about God's activities, people will be able to take it, understand and accept it. So we have to apply this new inspiration in our lives. Wherever we are, you could be at public place, you could be at Baba's place, wherever we are, the thought has to be, I have to reveal Baba. It's very, very beautiful inspiration for all of us. We all were looking forward to get clear answers. How do we reveal Baba? So Baba is giving us some very practical methods which we all have to adopt, apply, and reveal Baba. Om Shanti. Om Shanti, can Mike, you have to unmute yourself. Om Shanti Didi, Om Shanti everyone. So wonderful to see you. You're looking so well. It's very Thank you. good. Here we are. I'm in Brazil. We've got a retreat this weekend. But in fact, on Sunday, tomorrow I'm going to Sao Paulo and Sunday I'm going to Mataban. So we'll see you there soon. But related to these points that are coming up with the Aviak signal about unity and faith, I've been listening to you tonight. There are 5 things that I'd like to chat with you about. Yesterday, we had a session for all of Brazil on the importance of Drishti. And it was like we have a Tapasya group that gets everyone online at Amrit Vela, because it's 4 o'clock for us is only 2 a.m. for you in New York. So it's they have this group, and it's been going ever since every single day for 5 years. We have this Tapasya group, and yesterday they wanted to chat about Drishti, and I really feel that learning to take Baba's Drishti and to stay within Baba's Drishti really helps us to develop a sense of unity, because he's seeing one. He's seeing what is valuable in each of us. So it's not just taking Drishti, but Baba's Drishti falls upon us. He's seeing us. He's seeing our qualities and how much that helps to heal us and bring us together, because unity is about not just within ourselves, but especially about the collective and the harmonization of sanskars. So how do you see the importance of, because actually that was the question, why should I just look at Brahma Baba's picture and learn to take Drishti through the Avyakt form, when I can just connect up with the seed form of Shiv Baba, and that's it. And I really feel, and we all really feel, that it's very important to take this into consideration, because it is Baba's work, Brahma Baba's work and Shiv Baba's work. But how do I take Drishti from Avyak Bapdada every day? That's the question. What's the importance of us in our in bringing about unity in ourselves and between ourselves? You know that there is a whole story of how this sharing of the Drishti began.
that in the beginning when Brahma Baba, he was getting all these visions, and so one time one of the sister was very honored, one very mature sister. He made Baba and Mama sit in front of her and said, now take drishti so that you will know, you will recognize, you will connect with Shiv Baba. So they both, for about, they say 10-15 minutes, for few days, Shiv Baba is coming and giving drishti to them, to Baba and Mama, through her. And that relationship, that bond, that, the experience of love, experience of, Baba's highest qualities, all that was happening through drishti. And after that, then Shiv Baba, when entered in the body of Brahma Baba, Baba knew who is in me now. If Brahma Baba wouldn't have taken drishti, then maybe he wouldn't have recognized. So you must have seen that when people are upset or something happened, they don't look at you. And the love and communication which happens through drishti is a very, very important thing. Because the first contact always, well, we understand drishti, but Lokik people also, when you meet someone, you look at each other, right? You might not call it drishti, as I said, but we always look at each other. And whole story of relationship begins from drishti. I still remember that once I was in Brazil, and I don't know which city, but there was someone from Lebanon had to be speaker with me. So when I was coming up the stage, he was coming up. He looked at me, I looked at him, and there was some kind of suddenly like connection happens. So I think that drishti, whether it is taking from Baba or before, we used to always share drishti and say Om Shanti. These days we don't do that, right? We just say Om Shanti, but we don't share drishti. So I think that the love, connection, relationship, and you must have noticed that when there is unity, there is some kind of deep understanding within a family. Then you signal someone with the eyes and say, now you do this. So they understand. It's not everyone will understand. So unity really comes also through drishti and signals through the eyes. So I think that there is importance of taking drishti. I mean, I can sit in front of point of light, and I am point of light. But also, why Shiv Baba has to come in the body and give drishti? Baba could do everything from there. Because Baba, drishti is important, listening is important. That's why he comes and he gives drishti and he speaks to us. Both are very, very important. So I think that Brahma Baba never sat with closed eyes. Sometimes while sitting in meditation, we feel like closing eyes, as you feel you are going more deeper and all that. But the benefit of drishti from Shiv Baba through Brahma Baba or Avyak Baba is something which kind of bring you to your self-respect. Recognition of your own self also comes through Baba's drishti. And if Baba's drishti I don't take, I won't recognize myself, because Baba looks at each one of us in our stage of perfection. Baba looks at each one of as a goddess or god. So drishti brings a lot of power, clarity, recognition. It's very, very important. Didi, you mentioned that when you came to Brazil, you were in a program, and that fellow, you had a connection with him.
But I was remembering that you used to come every year for a while. For many years, you used to come every single year. And the centres really look forward to it because every centre you would offer Borg. Yeah. And I remember there was one centre where the message was, I can't remember exactly, but Baba said that, uh, you are having difficulty amongst yourselves. When you sort things out, then there's a whole lot of people I want to send here to the center. So it's like when you people have more unity, I will be able to send more people to the center. Until then, you can't get along with just 5 people. Why would I send other people? So it's a question that often comes up. And what are the steps? Let's say a center and the relationships are not so great. What are the 2 or 3 main steps that you would suggest for a center that really wants to create a sense of unity? Yeah, first important thing is to sit together in meditation. You Amrit Vela together. I know that these days, wherever people are comfortable in their room or wherever they sit for Amrit Vela, but there was a time where we all sat together. Even Dadi Janki, even her body was not well, she will get up from her room and go in Baba's room and sit. So collective meditation and also sharing some spiritual knowledge amongst ourselves. Because generally, when we sit, either we share about service or we share about issues or we bring up things where different types of sanskars emerge. But we never have just pure kind of spiritual chit chat, which is also very important. But also, what I found that once a day at least eat together Brahma Bhojan, whether in the noon time, if not, then in the evening. And one of the things which Didi Mohini used to do with us, every night before sleeping, we did 10 minutes meditation and shared our how was our day and what questions people ask and also if there are any feelings or any emotions we shared in that meeting. Because Didi used to say, laugh when you have to laugh with the group, when you have to cry or complain, do it within the group. Otherwise, you will do somewhere. Why people go and start telling other students something because I am not hearing, I am not kind of paying attention. So I think that every night we used to do. Now it doesn't happen. And sometimes, okay, sit, we always say, okay, let's read Dadi's class or Avek Babdada's Murli and let's churn together. So some of these spiritual things, if we do together, whether in the beginning might be 5, 10, then it becomes very much like a family traditions. And I think that definitely, and that's what I could think of now. The thing about you definitely must have experienced it. I have experienced it. The ancestor souls there are very few of them with us. They're in a different role. But all of those many, many, many meetings about service, what I observed, and it really keeps things unified, is that our seniors would never forget that it was Baba's service. And often Daddy Gulzar was in the meeting and they bring up a question, and then Daddy would take that question to Baba and come back the next day with something from Baba. So the feeling was that Baba was actually part of the meeting, like literally. But with time and with everything online and so on, I think we can easily forget that it's Baba's service, and it's not my service or someone else's service or my center or someone else's center. How do you think that in these days we can really make sure that we don't lose sight of the fact
that we are just doing Baba's service, not our service. That's because that's where the sanskars get mixed up and disunity is created. See, that is why when we start the meeting, we should have proper meditation, together. And after that, just share, give everyone 1 minute, like in our RC's meeting. We sit and then everyone tells where they are at or what is their present inspiration. I think that is something we should do it. There was some people came from Japan, and when they stayed with us in Madhuban, they said that one thing we all like very much, that she said that we all believe we are instruments, but we don't, the way you all believe, I am God's instruments. So I think somewhere we forgot that also. So we say, I am just instrument. I am Nimit, but God has made me Nimit. I am God's instrument. So as much we can bring in word Baba, Baba's instrument, Baba's service, everything belongs to Baba. It's Baba's yagya. When double foreigners came in the beginning, for everything they used to say, oh, this is Baba, this is Baba. And then after some time, maybe whatever happened, we only say, this my, I and my start coming very much. And I think we have to definitely, for our final stage, go back to our original thing of keep reminding about belonging to Baba, Baba's seva, Baba's instrument. Use word Baba more and more, right? Didi, you spoke about the revelation, and Baba has said many times that the revelation will happen when we're all one, in a sense that we have one thought, basically. But to get to that state, it's not about, we will not reveal Baba through brilliant individuals, some great yogi or great jnani. It won't happen. They will be touched by how well we get on together, not how brilliant an individual is. So that for me is the reason why we have to come together at a higher level, because Baba's there and he's calling all of us, and if we all go towards Baba, we also come closer to each other. So how do you see us actually getting to the state where we can have just one powerful thought and that's it? When Baba first time had a meeting, Baba never, like, when we all came, we suggested, Baba, we can have meeting. There never used to be like meetings for planning or service or anything. So when we said it, then generally the formula for a good meeting is, they say, go wild as much as you can. And in the end, you come to one conclusion. And I remember that means, like Dadi Prakash Mani was first time coming to USA. What should we do for her? So we had one of the sister who was very professional to conduct meetings, and she says, okay, everyone give your ideas, everyone give your ideas. And in the end, something which came up was like, then everyone agrees to that. So allow that freedom, but also knowing that that conclusion has to be just one. But also, when people do programs, generally they say, what would people like? What subject they will like? And I immediately say, but what do Baba wants them to get? So why only we think what people want? Why don't we think what Baba wants us to give? And completely direction changes, because this is what Baba wants. But what people want, what I want comes first.
And we live up to there. We don't even come to a point, okay, let's together and see what these days Baba had been telling us as a message to be shared. So somewhere I think us and I and all that has entered Lord. And if we bring Baba, and Baba's teachings are unlimited, unbelievably very wise, very supreme. So when we think of Baba Yeah. and then say, but this is what Baba had been saying, and then based on that, whatever Mhm. vocabulary you use is fine, but at Yeah. least the pure thought of Srimat and knowledge is there. The last thing, the final thing that I wanted to share. I mean, we don't have much time, but you saw, and we saw this evening, Daddy Chandramani, one of our great examples, great inspiration. When I think of the word Shiv Shakti, she's the one that comes to my mind. She was such a powerful yogi. And as you, I've visited many centers in the Punjab, and I noticed that there was tremendous unity. So, Mm, how do you think she brought about such unity in the centers in the Punjab zone? mm. Yeah, You obviously knew her very closely because it's just next door to Delhi, right? right. But yes, even this time, because every region comes to meet me, so this time when Punjab sisters came, the system they have, exactly like here we have created NTC, and they meet every Monday on Zoom and discuss about everything. So they also have something where some of the main instruments meet regularly, either if not at one place but through telephone calls. Chandramani Dadi, wherever there was conflict, wherever she went there, Baba will send her or Dadis will send her, because she had two important qualities. She listens to everyone, and genuinely listens by saying, yes, your point of view is right, your point is okay. And second, she never got upset. She didn't had like, oh, I like this one, I don't like this one, because internally she herself was free from any kind of anger or like dislike, and so complete purity in the sense, the way she will talk, it definitely brings people close to each other. And looking at her and the way she will speak to them. But these days what we have preconditioned our mind and have impression about a person. She's like that. So when we are hearing that person knows that I won't get the response I want. So I think that's what Baba said in today's Awake, the signal that respect everyone's idea. Listen to everyone with pure heart. And when you do that, automatically that love for each other emerges, then bhavna, pure feelings emerge, and definitely there is unity. So I think Yeah, each one of us to work on ourselves first, and then we that can. that's that was definitely how she came across. She would listen. Daddy G was also like that, listening to everyone attentively, people making people feel at ease, and then they'd be willing to come closer. And Hmm, it's in coming closer that we unify. And this yeah. is our challenge. No, I think these days my love for Baba should emerge into love for everyone. And when there is that love, the pure feelings emerge. I see the magic of the love these days, that lot of bhavna, pure feelings emerge. And pure feelings increase the capacity to do everything in an unlimited way for Baba and Baba's Yagya and family. So these are the practical proofs, and we all have to, each one has to become embodiment Hmm. of love.
embodiment of love and, just love for everyone, and let everyone be what they are, but still we can be together. We can be one, right? That's a good thought to finish up on. Bringing that divine love into play amongst ourselves, and we've got so many examples. So thank you for this brief interaction with you. It's been really a really beautiful moment for me. Thank you, Didi. Okay, Brother Ken. Thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, thank you. And tomorrow is Saturday, our schedule from Amritvila. 3:30 a.m. to 4:45 a.m. 6 o'clock meditation will start, followed by 7 to 8:30 a.m. Hindi Avik Mali. Then in the afternoon, 12:30 to 1:30 p.m. Avikta Youth Class. 12:30 to 1:30 is Avikta Youth Class. 1:30 to 3 p.m. Avikta Children Class. 6 o'clock Bhakti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमक उठे हैं सूरज चांद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली। जो अनुभव करे वही भाग्यशाली, साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं
खुशबू फैलाए, लगता है हमको तो बाबा, बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए, प्यार को तेरे तरसते बाबा, एक बार तो अपने पास बुला लो, दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए, कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति, ओम शांति।